इंटीरियर डिज़ाइनर का मेन फंक्शन ये होता है कि उसको एज मच लिवेबल बनाए आपके लाइफस्टाइल से. इट्स नॉट माई हाउस, इट्स अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लिव इन द हाउस. एक तो बनारस में ना फूड इज सच अ बिग थिंग. आई लव यूपी का फूड भाई. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. इट्स अ लॉट ऑफ फोर प्ले. यू हैव टू गो बिहाइंड. नॉन डिजाइनर्स थोड़ा होल्ड बैक थोड़ा. मुझे सबसे पहले जानना है कि स्पेशल डिज़ाइन होता क्या है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं स्पेशल डिज़ाइनर्स के बारे में. आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन दैट आई केम अक्रॉस. Okay, so it's a very vague term as such, at least for the Indian context. I wouldn't say vague, but it's something that is उसका अभी तक एक definition create नहीं हो पाया है. I'll tell you why. Because spatial design, if you look at the words itself, उसमें दो चीज़ें हैं कि space. Now architects, interior designers, landscape designers, they're all doing space. मेरे दिमाग में भी पहला ये आता है कि जब दो चीज़ें, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ यूएक्स का बैकग्राउंड. जब भी मैं स्पेशल डिज़ाइन वर्ड की बात करता हूँ, या तो मेरे दिमाग में आते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स, या तो आते हैं एआर डिज़ाइनर्स, जो भी आई थिंक उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारा चीज़ें भी जानने के लिए बाकी हैं. सो हाँ, तो वही है कि spatial design that sits in between the gray area of space and experiences, how you design an experience with any kind of a space. Right? We know about architects, we know about interior designers, we know about landscape designers, but space design जब हम बात करते हैं, you can take the best from all these and design the best of experiences within it. So it gives you a broader area to work with, but the entire focus is on experiences. Your entire focus is on the interaction with the spaces. So ये as such अभी बहुत abstract हो रहा है, but as soon as people get to see what these people are doing, एक बार बहुत सारे mass produce हो जाए projects जो spatial designers ने create किए हैं, तो फिर people will understand it. जैसे UI UX अभी तक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यही हो रहा था. ये तुम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो कि कौन हो, वेब डिज़ाइनर्स हो कि, मतलब इट्स अ बिटवीन स्पेस, राइट. पता है मेरे पेरेंट्स को भी अभी कुछ टाइम तक अभी तक यही लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, मैं सिर्फ वो डिज़ाइन करता हूँ. तो वही है. नाउ इट्स देयर सो मच क्लैरिटी कि अभी UX ऑलमोस्ट हैज रीच्ड इट्स पीक, आई वुड से. लाइक अभी जॉब बहुत हाई बूम पे, so now people know what is UI UX. At least I'm hoping a lot of अभी तक in the community people must be knowing. From my experiences what I know, अभी तक ये था कि लोग UI की बातें बहुत करते थे, screens, but why we took this initiative, why this podcast is so that we can tap onto different industries. We got you कि spaces कैसे experiences shape करते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स कैसे शेप करते हैं. लेट्स से मार्केटिंग और ब्रांडिंग, विल ट्राई टू गेट पीपल फ्रॉम मार्केटिंग और ब्रांडिंग साइड भी एंड ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन कि वो कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को शेप करता है, राइट. सो टुडे वी जस्ट वांट टू लाइक नो कि स्पेसेस कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करता है. या आई मीन experience has always been a part of when you are learning architecture or interior design for that matter. क्योंकि हमारा यूज़र इज़ द अल्टीमेट गोल इज़ यूर डिज़ाइनिंग फॉर दैट पर्सन. तो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन तो है ही. तो नाउ इज़ जस्ट दैट द फोकस हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द स्पेस. ओवरऑल जो फोकस है ना वो एक्सपीरियंसेस पे है, राइट. यू आर क्रिएटिंग दैट एक्सपीरियंस. द फंक्शन ऑफ द स्पेस है कि एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस. कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर द ऑडियंस की एक स्पेशल एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं फ्रॉम डिज़ाइनर्स पर्सपेक्टिव एंड देन हाउ इट अफेक्ट्स द एंड यूजर. ठीक है, आई टॉक अबाउट अ रिटेल एक्सपीरियंस क्योंकि फिर वो बहुत रिलेटेबल हो जाता है. इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटीरियर? या ओके, आई मीन नॉट रियली, इट विल बी अ सबसेट ऑफ इट, बट रिटेल थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा. ठीक है, लेट्स से यू हैव एन एक्स ब्रांड. ओके, लेट्स से यू हैव अ ज्वेलरी ब्रांड. ओके, विच इज़ not a hippie, not a very traditional, but you are trying to get a contemporary jewelry that you want to sell,
Okay. And now you want the space, you want to start a showroom, your jewelry showroom, जहाँ पे you want those products to be displayed, you want the products to be experienced, Right. touch and feel, you want to understand the brand. ठीक है? So you come to me saying that I want the best of experience which highlights the product, my brand and the narrative. ठीक है? Okay. Let's say you have a brand which is focusing on very earthy jewelry. Okay. So as a spatial designer, I need to know your narrative कि क्या है तुम्हारा ब्रांड की कोर वैल्यूज क्या है. ठीक है. देन एज अ स्पेशल डिजाइनर माई रिटेल जो भी क्रिएट हो रहा है शोरूम उसमें आई विल एम्बेड दीज वैल्यूज थ्रू डिफरेंट सेंसर्स. ओके. विजुअल हो गया, हियरिंग हो गया और एनी थिंग फॉर दैट मैटर. तो मेरा फोकस है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग हो जाए. ठीक है. नाउ द शोरूम इज देयर, there's shelves or whatever the display or anything for that matter. Right. वो तो है ही. But as someone who's walking into that store, I want him to know that you are hardcore on your values. This is brand and this is the store for this brand. ठीक है. Right. What it does कि तुम्हारा product जो है वो आपको बेचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अच्छा इसमें ये diamonds यूज़ हुए या etc etc. The space itself does the job. Yeah. Right. So now you align the customer with your brand. That's the first step. The space does it for you. Your next step is कि sir, how would you like to pay? Because your narrative is crisp and clear. Okay. Right. I mean, this would be not that easy. कि how would you like to pay? But your space actually gets the customer in the same frequency of your brand. He knows, okay, this is what this brand is about. इंडिया में स्पेशल डिजाइन सीन कैसा है अभी? अभी तो इट्स वेरी न्यू बट बहुत अच्छा काम कर रहा है. डायरेक्ट स्पेशल डिज़ाइन के एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है बट इन टर्म्स ऑफ म्यूजियम्स, लाइटिंग इंस्टॉलेशंस मान लो या फिर रिटेल एक्सपीरियंसेस जो मैंने बताया अभी, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं क्योंकि द कंपनीज दैट आर वर्किंग विथ UI/UX they want spatial designers to come on board to design their spaces, to design multiple projects for them. Then how is it different from service design? It is just getting someone who has a background in interiors or architecture or let's say has a core in that. He understands how spaces function, how space planning functions. And then this is a secondary or an intermediate level to it. Okay, got it. You were talking about a festival that you've been a part of recently. It's one of the best places I've been. I mean, Banaras is actually one of my favorite cities. Why so? Just the vibe of the city is such that it makes you a part of the city. You don't feel like an outsider as such. I mean, you will never feel you're an outsider. बनारस में मतलब खुद में एक different space है. Yes, right? Yes. And I mean, yeah, on the festival, I mean, Mahindra Kabir Fest. It's a festival done by Teamwork Arts. Okay. So these guys every year they plan. So after lockdown, they started again. So we were managing the delegates. We were managing the experience. What is the overall theme? What we want. Because every year the festival happens, so every year we need to make sure there's a different experience given out to the delegates who are coming for the show. Yeah, so the theme of the show is again about Kabir, celebrating Kabir, his poet, everything about Kabir. But for me the new experience was कि उसी जगह पे every time these guys go and they manage to make a different experience out of it. How? कि they'll contextualize कि हम क्या कर रहे हैं. एक तो बनारस में ना food is such a big thing. I love UP का food भाई. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. Like everywhere you go in UP, I mean in Banaras, you'll see people are passionate about food. Everyone is passionate about food. So they get that aspect to the fest. They try to give the best of food experiences. What it does is the delegates, whoever is joining with them, they are educated about what is the best of Banaras. Right.
and now they're associating कि Kabir was from this kind of like the best of experiences. For तो कबीर का जो भी experience है it goes above. तो वो हो जाता है. तो it really doesn't mean कि हम spatial designers है तो सिर्फ हम space के बारे में plan करेंगे. It's about the overall experience. काफ़ी सारी चीज़ें हाँ लाइक रिलेट करती हैं उससे, विच टेक्स अस टू योर थीसिस, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे बिकॉज योर थीसिस वाज somewhat related to what we have talked about अभी. But उसके पहले can you break down special design process and simplify it for someone who wants to start into special design industry, because अभी ये काफ़ी नया, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे भी. That's true. और ऑल्सो ये टर्म भी ऐसा है कि इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रखा गया है अभी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ अगेन द मोर वी सी प्रोजेक्ट्स कमिंग वील अंडरस्टैंड कि इसमें ये भी होता है. बट वाई आई चोज टू वर्क विद स्पेशल डिज़ाइन is for the very simple reason that you don't limit yourself to any kind of space. Yeah, you're happy to work with a small lobby, you're happy to work with a small kitchen space. Yeah, you can work with a retail. तो ये है. तो फंडामेंटल्स जो है स्पेशल डिज़ाइन में वो आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए आर्किटेक्चर से या फिर इंटीरियर डिज़ाइन से या स्पेस प्लानिंग से. ठीक है, तो उसमें व्हाट मोर यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर प्लांटिंग और यू आर एनहांसिंग द इंटरेक्शंस विद दीज स्पेसेस. ओके, ठीक है. सो आई मीन वेरी बेसिक लेवल से लेट्स ब्रेक इट डाउन. ठीक है, मैकडोनल्ड्स, आई मीन आई ऑन माई वे हियर in the drive-through. I mean, drive-throughs have been there for a very long time. Yeah. What they have done so far, I mean, it's coming up now everywhere, but they've started adding those screens, those huge screens, at the very entrance. Yeah. Now the flow of the space is distributed now. So now you can just basically go. They've made the interface so easy, very understandable for a layman to go, select, tuck, I'm done. Go and pick it up from the counter or they'll come and serve you. Right. Just go and sit. Yeah. So what this screen has merely done is the space ka jo overall orientation hai, how people used to go or seek the space. It used to be either I go to the counter, I go to the person, I talk, I give him my order, I go to the next counter where they'll give it to me and I'll go back. Now I directly go to the screen which is at the entrance. Right. And I go back and sit down. Yeah. So यहाँ पे space और digital interaction combined, the interaction of the space has changed. Right. This is a very layman example. Okay. But with this minute change or let's say a big change, वो पूरे space का optimization बहुत change हो गया है. Now those guys don't have to come and there does not need to be a person who's taking in orders. पूरे स्पेस का नैरेटिव चेंज हो गया, राइट. एंड देन यूज़र के फ्रंट से कि वो जैसे उसके डिफरेंट टच पॉइंट्स होते थे. सॉरी, मैं थोड़ा डिज़ाइन की लैंग्वेज में अभी बात कर रहा हूँ, नॉन डिज़ाइनर्स थोड़ा होल्ड बैक थोड़ा. बट पहले क्या होता था, यू गो टू अ मैकडोनल्ड्स स्टोर या किसी भी रिटेल फूड चेन पे यू एंटर, you look at कि you find कि काउंटर कैसा होता है, किधर पे you have to place the order. वो बहुत प्रोमिनेंटली होता था, राइट. उसके ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली मेन्यू होता था. बट वी हैव अ मैकडोनल्ड्स नियर बाय, एंटर करते ही सबसे पहले स्क्रीन होता है. यू राइटली टॉक्ड अबाउट इट, सो आई वाज एबल टू रिलेट उससे. तो दैट इज I mean it's a great design overall, because it solves many things for the customer. He gets a hands-on experience of placing his own order. Okay, he can go back, change it, cancel it, do multiple. He wants to wait for the next 5 minutes thinking, oh, should I or should not? Can you do that with a queue and you are waiting, thinking about should I or should not? You will be forced into right. taking your quick decisions. But with that, you're doing your own order.
So there's also an experience with it. Okay, you're placing, then the huge green screen comes up, your order is placed, so and so. So I think that's a great experience. I will go little off topic right now, but what about Subway? सबवे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमा होता है कि क्या सॉस यूज़ करना है, क्या टॉपिंग्स यूज़ कर रहे हैं. इफ़ नॉट अ फ्रीक्वेंट वो, सो सबवे ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों नहीं किया? I don't know why they're not doing it, but I think yes, I could relate to that for a very long time. कि for a very long time I didn't know that there's a veg counter, there's a non-veg counter. I mean, for a very long time I couldn't know. I just thought every time the guy used to point out, "Acha, you go to this side," or you. But then I realized, okay, there's a two different sects into that. But that's a very good example कि कितना difference होता है. As a brand, Subway has been there on an average. They have been consistent or whatever, but their user groups know them. For a new person, McDonald's is much more easier. Right. Yeah. I mean, that's a plus. That's a win-win for McDonald's. Right. So, yeah. Again, how different chains make use of spaces differently, right? But now that we have talked about कि digital screens हैं, बहुत ही नई चीज़ आ रही है डिज़ाइन कम्युनिटी में, मार्केट में लोगों के लिए आने वाली, बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल नया है. बिकॉज जियो रेवोल्यूशन के पहले लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होते थे. सो अब जितना ईजिली लोग ऐप्स यूज़ कर पा रहे हैं इंडिया में, पहले नहीं थे. रिसेंटली मी एंड अनंत, इज बिहाइंड द कैमरा, वी वर लुकिंग एट जोमेटो. शायद कल की बात है, जोमेटो AR एक्सपीरियंसेस लेकर आया है. सो बेसिकली you can simulate, all of this is a simulation. मतलब असली में नहीं हो रहा है वो, but then you have your tabletop, you select your dish, you get to like place your dish on the tabletop and then simulate कि खाना आकर कैसा रखा होगा. Oh wow. Right. AR, it has been there since years now, बट इन लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होने वाली है. बट उसके आगे भी अब जा रहा है लोग, डिज़ाइनर्स, UX एंड एक नई ब्रीड आई है डिज़ाइनर्स की, MR, मिक्स्ड रियलिटी. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि जो फिजिकल स्पेस है और जो डिजिटल स्क्रीन्स है उसको मिक्स करना. राइट. इफ आई डोंट नो मतलब ये टर्म वहीं से आया या नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि मिक्स्ड रियलिटी का मतलब ये है कि जो अभी तक डिजिटल स्क्रीन या फ़ोन में हो रहा था, फ़ोन की चीज़ें तो फ़ोन की स्क्रीन से बाहर ले जाके उसको अपने फिजिकल स्पेस से कैसे इंटरेक्ट करोगे. सो विथ MR, आई मीन जो तीनों सेक्स वी नो कि AR है, VR है और MR है. ठीक है. इफ़ यू वांट, लाइक वी कैन टच बेस ऑन द थ्री, बट AR, which is augmented reality, which is basically saying that there is a physical entity out there. We are just pointing it out in a screen. Okay, that is your AR. Okay, so basically in AR, it's the first level of this digital blend. Okay, VR is the last, which is a completely new environment, which is a virtual reality, which is a completely new space that has been designed. Okay, which is not based on the physical environment. And coming to MR, which sits in between. Okay, so basically your objects from whatever you have created new, let's say this small plant I have created on a screen. Okay, it's a new toy I've created, but I'm placing it in this environment, in a physical environment, and I'm allowing people to interact with it. So that is MR. So it's a mixed reality. It takes both the worlds together, and that is how it functions. So MR ka as such with India, I mean, I can talk only about what we are doing in India as such. So MR has a lot of scope. MR क्योंकि internet, now that we know, we have a lot of access to internet. People are getting much more easier to use these interfaces
apps are getting much more well designed. तो MR का नेक्स्ट जॉब इज़ कि मिक्स्ड रियलिटी कैसे बहुत एक्सेसिबल हो जाए, कैसे वो एक नया एक्सपीरियंस बिल्ड करे फॉर अस एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, एंड फॉर अ डिज़ाइनर लाइक यू एंड मी. We have to be very ethical of how we use MR. So that's something we can talk about. But MR is going to change how we consume or how we buy products. I see MR as an extension of UX UI design, because a considerable amount of UI is going to be there in MR as well, right? But मुझे ये जानना है कि like एक UX डिज़ाइनर, UX UI डिज़ाइनर जिसको अब MR वाली जर्नी स्टार्ट करनी है, उसको स्पेसेस की क्या नॉलेज होनी चाहिए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू नो द फिजिकल स्पेसेस एज वेल बिफोर डिज़ाइनिंग MR एक्सपीरियंस. तो आई थिंक स्पेशल डिज़ाइन में आई मीन MR के लिए स्पेस डिज़ाइन इज समथिंग दैट यू हैव टू नो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ यू बिल्ड द एनवायरनमेंट. क्योंकि कोई भी मिक्स्ड रियलिटी इज़ इंस्पायर्ड और इट्स टेकन फ्रॉम अ फिजिकल वर्ल्ड. सो यू नीड टू नो कि उस स्पेस का तुम पे क्या अफेक्ट होने वाला है, ठीक है. सो यू और फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गेम डिज़ाइन. सो गेम डिज़ाइन में क्या होता है कि यू क्रिएट दो एनवायरनमेंट्स एंड देन यू एम्बेड द कैरेक्टर विद इन दैट स्पेस. So whoever has conceptualized the game or who has been building it, they give out information ki what environment is the character placed in. So for MR, your user is going to be embedded in that mixed reality. So you need to be aware of your physical environments, and then you need to know what narrative is this product about. तो हम उसको यहाँ पे क्यों रख रहे हैं उस physical environment, why here and why not in some other place. राइट. तो ही हैज़ टू नो कि उस स्पेस का क्या वैल्यू है इस पूरे MR में. राइट. एक और चीज़, मतलब मुझे एक और, बिकॉज जब भी कुछ ऐसी नई चीज़ आती है जिसके बारे में लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशल डिज़ाइन, आई थिंक हम लोग भी लाइक वी आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज टू टॉक अबाउट. आई थिंक पूरी तरह से भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है. बट देन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस तुम्हें क्या लगता है कि इसका स्कोप क्या होगा इंडिया में? इंडिया में I can start from cities that will be able to relate to it more, where a lot of retail का scope है with spatial design. But I will expand कि क्या हो सकता है. मतलब it's just for me also. I am also thinking कि ये किस तरफ जा सकता है. I mean क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा projects देखने को नहीं आ रहे हैं that are talking कि ये spatial design enhanced project है, ठीक है. But museums could be a great place to start. I mean, museums already do it. Now you get those scanners. You scan in terms of if you're looking at an object, you have a scanner that you can scan, and then you can see the object. If it's interacting, you can just touch base with it. You can play around with the object. It briefly gives you an idea कि वो किस period का है, what narrative it was placed in. Okay, let's say you have a sword of a certain kind. I mean, there are multiple types of swords. Right. A layman will just look at it, will not be able to look at it कि वो किस ज़माने में, and why is it not a 100% cast iron sword. It could be some mixed metal or a bronze sword. What can happen is कि वो scanner में the sword is put into context कि this region was heavily acquiring bronze at that period of time. So now they started making those swords in this metal. तो उस डेमोग्राफ को कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं. तो दैट कुड बी डन. तो म्यूजियम्स में ये सब होता है. You get a lot of visualization of the product. So again, museums are already doing it. We can start projecting the same kind of things into retail. We can start doing this in multiple day-to-day things also.
now the Vision Pro is coming up and all these things are coming up. It'll take some time to get used to in our context. We're still not like a first world country, right. so हमारे लिए वो थोड़ा टाइम लग सकता है. बट एज अ स्पेशल डिज़ाइनर और हु इज़ वर्किंग इन इट, हमारा प्रैक्टिस ये होता है बिकॉज स्पेस के साथ ना बहुत टैंजिबिलिटी होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ टैक्टिकल थिंग्स दैट वी डू, एंड व्हेन वी इंटरैक्ट विद द डिजिटल ऑब्जेक्ट, it's a different experience, right? So bringing it together is new for us. So okay, why did you think of getting into spatial design, or why did you term it as spatial design, not interior? कि मेरे को interior नहीं करना है, then मुझे लोगों का experience differently shape करना है. Yeah, I mean, I had How did to, it start? Yeah, for me it was two things. Somewhere I was exhausted with interior or just interior design projects. I mean, I shifted to product and furniture for some time, but interior से क्या होता है, you are talking about textures, you're talking about sensory experiences, you're talking about functionality of the space. Here spatial design में you are getting that leeway, or let's say you have that opportunity to work with experience as the function. तो तुम्हारा फंक्शन ये होता है कि तुम सामने वाले का एक्सपीरियंस बेहतर करो. तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि फॉर मी द स्पेस इज़ कम्प्लीटली न्यू, विच मीन्स दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू फेल मल्टीपल टाइम्स इन दिस. नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट मी एज सच कि ओ दिस इज़ नॉट अ स्पेशल डिज़ाइन प्रोजेक्ट. कैन यू सिंप्लीफाई थोड़ा सा फॉर द ऑडियंस, एंड देन टेल मी कि जैसे एक लेट्स से एक साइट मिला, इंटीरियर डिज़ाइनर का अप्रोच क्या होगा कि लेट्स से क्लाइंट का एक ब्रीफ आया, मेरा परसेप्शन इंटीरियर्स को लेके है कि चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, राइट? लाइक मुझे बोहो थीम चाहिए, मुझे मॉडर्न थीम चाहिए लोगों, और मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से भी या यूज़र्स जो नॉर्मल लोग हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, वो बस यही चाहते हैं ना कि एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए. सो that is the I think more or less the general perception with interior. I mean, a lot of clients also come with a good brief saying that yes, aesthetics are a part of it, but that functionality or for them, they have to live in that space. Right, let's say it's a interior design, it's a residential project, they have to live with that space for a long time. It's a day-to-day space. Okay, so interior designer का main function ये होता है कि उसको as much livable बनाए आपके lifestyle से. It's not my house, it's ultimately you are going to live in the house, right? It has to be adapted to your lifestyle. Let's say you have 15 people on an average coming to your house daily. I need to make sure the damping of the space, the sound of the space is done in a way that I can accommodate 15 people without making sure with making sure that the neighbors are not getting disturbed. Yeah, so as an interior designer, I need to know what kind of a lifestyle you have. Let's say you have only 4 people in your house, the damping is not an issue as such. Yeah, so certain things have to be taken care of when you're designing this. How will a spatial designer will approach इस चीज़ को? Yeah, so इसमें क्या होता है कि a spatial designer, of course, he can also work with interior design projects, but the ultimate goal in this would be interactions and experiences, कि तुम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो फंक्शन कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो. ठीक है, तो फॉर मी लेट्स से आई गेट दिस प्रोजेक्ट and if I have to create a better experience, I will get into the nitty-gritties of the person's lifestyle, the person's choice of textures, कि उसको किस sensories, you have visual, you have audible, you have sound, you have vision, you have tangibility, your textures, you have multiple things. तो मैं इन चीज़ों पे बहुत डिटेल में जाके काम करूँगा एज अ स्पेशल डिज़ाइनर, और उसको जोन्स में क्रिएट करूँगा. लेट्स से यू हैव
अ डिफरेंट स्पेस फॉर दिस एक्सपीरियंस, आपका जो दूसरा स्पेस है उसमें कोई और एक्सपीरियंस मैं एम्बेड करना चाहता हूँ. तो इट्स सिंपली बताऊँ तो ये इंटीरियर डिज़ाइन का स्पेशलाइजेशन हो गया इनटू एन एक्सपीरियंस डिज़ाइन. तो मैं वही चीज़ें करूँगा बट थिंकिंग अबाउट मोर एक्सपीरियंसेस रादर दैन more user centered. yes, more user centric, more lifestyle centric and more narrative centric. ये बहुत बड़ा पार्ट भी है कि narratives बहुत important होते हैं इस प्रोजेक्ट में. राइट करेक्ट. सी एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो भी नॉन डिज़ाइनर्स अगर सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट तो उनको लग रहा होगा क्या वेग बातें चल रही, राइट. कोई भी नई इंडस्ट्री जब आती है ऐसा होता है. बट आई थिंक स्पेशल डिज़ाइन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, it does exist in every bit we do in our daily lives as well, right? Yeah. So can you give me an example जब हम लोग normal day to day काम कर रहे हैं, how does this special design play a role over there? फर्स्टली जो कोर फंक्शंस है जो आर्किटेक्चर में सिखाए जाते हैं, इंटीरियर में सिखाए जाते हैं, दे स्टिल स्टे ट्रू टू स्पेशल डिज़ाइन एज वेल बिकॉज यू कैनॉट मूव आउट फ्रॉम दोज. What adds on is your knowledge of how do you interact with digital environments. क्योंकि हमारा interaction with digital screens, we are moving towards that. Yeah, हमारा most of the time we spend on digital screens. Yeah, so now it's just it's a matter of time. Those digital screens don't feel flat. So right now as a spatial designer we need to make sure कि वो फ्लैट स्क्रीन से आगे बढ़ के इट बिकम समथिंग मोर एम्बेडेड इन आर नेचुरल एनवायरनमेंट्स. तो लाइक फॉर एन एग्जांपल जैसे यू यूज्ड टू हैव दोस रिवर्स पार्किंग कैमरास, राइट. yeah, it used to be just a camera just giving you a fisheye angle of what's around you and then you used to have a blinker कि अच्छा रेड लाइन है, रेड लाइन के आगे there's something. Right. अब वो चेंज हो गया. Yeah. Now we have those 3D cameras that project the entire environment around the car and you have get a top view of the car. So now it has advanced into something you can actually see the car in your environment. So within that 5 meter space you see everything that is around. Right. So it basically what it does is आपको बहुत easy हो गया to move the car around. You see what is around, you see what's traveling next to you. So that is a good example of how digitally that space got created and it's in real time it's projected on your car screen. Yeah? Right. So it's all a very basic need and it's an advanced reverse parking camera. Yeah. So in a similar manner digital environments को हम डे टू डे चीज़ों में कैसे ला सकते हैं. इट्स समथिंग डिज़ाइनर्स हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड आउट पेन पॉइंट्स कि क्या है, कहाँ पे डिजिटल स्क्रीन्स बहुत फ्लैट लग रही है और या फिर बहुत फोर्स्ड लग रही है एंड हाउ कैन वी एडवांस इट इनटू समथिंग दैट इज़ मोर सेंसोरियल, that is something that is more experiential. And how how simplified these experience could be, right? Because like again same चीज़ है कि इतनी नई टेक्नोलॉजी आ रही, बहुत से लोगों को फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव ऐसा लगता है कि ये फंक्शनल नहीं है, राइट? कि वी आर ग्लासेस लगा के दिन भर कोई कैसे अपने डेली काम कर पाएगा, राइट? तो वो चीज़ है. अगेन इतनी सारी बातें जब हो रही हैं, सो हाउ डू यू कन्विंस योर क्लाइंट्स कि स्पेशल डिज़ाइन की एक अनकॉन्शियस नीड है? हाउ डू यू मेक दैट? स्पेशल डिज़ाइन से एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज या फिर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि विथ स्पेशल डिज़ाइन यू गेट टू टच बेस ऑन अ लॉट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस. तो वो क्लाइंट के लिए वी ऑलवेज पिच कि दिस मेक्स योर प्रोडक्ट और दिस मेक्स योर एनवायरनमेंट फील मच मोर एनरिच्ड compared to your digital screen and a separate physical environment. तो we try to integrate it together. तो client के लिए वो बहुत beneficial होता है. Right. Okay. I think we are at the end of the conversation, but before we end, I want you to just tell me what's your approach when you begin a spatial design project.
Like any other design process, we start with mapping who we are creating it for, what is the narrative. क्योंकि क्या होता है, spaces are very sensorial, बहुत tangibility aspects होते हैं, and when you're embedding a digital environment with it, you need to make sure कि वो physical और digital का बहुत ही smooth interaction हो, ठीक है. So for that you need to know what kind of content or what kind of things the other user is used to or can relate to. So again, like your user study has to be great. In terms of understanding your spaces, you have to make sure कि आपकी जो site है or whatever place you're gonna be working on, what the project, what are the best senses you can use it for. कि किसी भी साइट पे लाइटिंग ग्रेट हो सकती है, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल लाइट. किसी भी चीज़ पे बहुत सारा स्पेस होता है, यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारा अच्छा साउंड का यूज़ कर सकते हो, यू कैन इंटीग्रेट दैट. तो समवेयर यू हैव टू प्ले विथ इट कि आपके डिजिटल स्क्रीन्स कैन एक्ट एज द ब्लेंडिंग मैकेनिज्म. तो उसमें it's a lot of foreplay. You have to go to architecture. You have to understand your basic concepts of architecture, and you have to understand your concepts of UI UX. You have to understand how your digital screens function, and then you have to bring it together. It's very rudimental at this stage कि वो कैसे होता है. Every time there's a project, let's say you have those light and sound shows. Yeah, it's a great example of spatial design. You create a new environment where your light and sound is interacting with you. Yeah, it's a great example, but again, it's a very focused environment. It's an experience. It is created for that experience, but to get it into our daily lives, there is going to be a lot of things that need to happen. Movie theater could be a great example. Yes. Right. Yes, definitely. And those, what do you call them, 70 or 4D? Yeah. That is such a, I mean, it was such a thing कि वो कितना great वो देता था. They used to have that vapor coming out, they used to have those seats moving and all of that. Yeah, so it was a very good start for the industry कि ये हो सकता है. And I think it will also align with game design for us. We'll take a lot of inspiration from game design. We'll take a lot of inspiration from traditional architecture, because जो core principles है ना, they will not change for sure, क्योंकि space is something to do with your tactile experience. While we talk about core principles not getting changed, yet I feel कि हर designer का approach different होता है. Yeah. Like there could be other spatial designer sitting here and talking about spatial design in a totally different domain, right? Yeah. So वो चीज़ है, and that was our intention to get you on the podcast today. Prem, for all of you, and thanks for coming on the podcast, Prem. Thanks, man. Hope to have you again. Yeah, I would love to be here. And since this topic is so new, it was just very enlightening for me also, that where does it go? And since I've been also working in this direction, I want to work in this direction. I think there's a lot more to come. I'm just very happy that there's so much energy around it. Right. And I think it'll be a great success for you as well. Right. While we grow together, right? UX और spaces अब क्योंकि साथ में मिलकर आ रहे हैं, and UX के साथ बहुत सारी चीज़ें grow हो रही है, right? So while it grows in the future, I would like to have you again on the podcast. For sure, we'll work on something for sure. Definitely, for sure. Chalo, great. Thanks. Hello, Prem. Okay.